Nous allons nous écouter, Inch'Allah Ta'ala, après mon station de Holy Quran, et notre a beaucoup d'expérience, comme écoute les 10 années avant, donc un modèle, une mahfil. Hadrat Sheikh Maulana Ahmed Tahir Muhammad Ziai Qadri दामत बरकातुहुल आलिया। मैं हजरत आपको अपनी इंतज़ामिया की तरफ से और अपने अहले इलाका मस्जिद अल-अक़सा के जो मुसल्ली हैं उनकी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस सफ़र को सफ़र मुबारक बनाए इंशाअल्लाह ताला। वक़्ते नात रसूल यक़ूल, avec sa niyat, Allah subhanahu wa ta'ala mit doonu lekia mohabbat rasul sallallahu ta'ala wa sallam. Liya durushif, liya nukumos programme avec qiraat al-Quran, liya nfadrush. Allahumma salli ala sayyidina ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. So without any delay, so today mudun dawat no special mehman inshallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala don barakat. हज़रत आपसे गुजारिश है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, आप आज सुनाएं इंशाअल्लाह और अहले मॉरिशस के दिलों को मुनव्वर फरमाएं. तफद्दल सय्यदी.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. MashaAllah, Alhamdulillah, we thank and praise Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal for this beautiful night, Laylatul Jumu'atul Mubarak, and to find ourselves in the masjid. Allah subhanahu wa ta'ala chosen us, each and every one of you, to be in the masjid tonight, on this big night, and also in this beautiful month of Sha'ban. Our zikr program is not a long one. We know people go to work and they have to leave tomorrow again for work. So usually after the Isha Salah, or even where we are, where I come from, we have a program for 1 hour. And so aap fikr mat kijiga. हम देर नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह, राइट? देर नहीं लगाएंगे और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे वो हिम्मत दे कि I will be able to produce what you have expected. So I'm not in the best of, I can say shukr alhamdulillah, बस शुक्र अल्लाह सुब्हानहू का शुक्र करता हूँ, लेकिन it's not my best of voices, and yeah, I think the pressure is also gone very high now. Alhamdulillah. Lekin I'm happy to be here, and I'm appreciative of the secretary, the treasurer, the chairman for allowing me to,
giving us the ijazah to address you here today. And so I want to say Jazakallah khair, ahsanul jaza, inshallah. May Allah give you a great reward, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen. And very important also is that as much as we ask the permission of the secretary and the treasurer and the chairman and the president, the permission has to come from the imam. Imam means the leader. Unke saye ke niche hum sab hain. If we don't take the saya, we are in the spiritual domain of the imam, that is of the masjid. Doesn't matter who the imam is. And abhi jaise unhone sunaya na Quran Pak, Allah Pak, Allahumma zid wa zid, Allah subhanahu wa ta'ala bless him. He said, unhone padhaya na Quran Pak, Allahu Akbar, very beautiful, mashallah. You are most fortunate to have the honorable imam of this caliber to recite so beautifully the Quran with such a beautiful voice. Allah Pak inko jazaa khair ata farmaye, grant him many, many years to be with you with khair and barakah and taraqi ke saath, inshallah. Imam sahab ka khayal karna. If you look after him, Allah will be happy. And imam is not an angel. Imam is a human being. He also make mistakes. Wa khuliqal insanu da'ifa. So we got to overlook. We have to look at ourselves also and see how can we make ourselves better. So under the spiritual domain of the imam, aapki ijazat ho, to hum kuch pesh karenge inshallah. First of all, before we start with the azkar, with dhikr, we first send upon the ruh, in other words, upon the ruh of Nabi Akram Muhammad, the soul of Nabi Akram Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ek surah Fatiha pesh karte hain. Anbiya alayhi salatu wasalam, that means all the prophets. Ashab Ikram, the companions. Ab mujhe malum hai ke many of you know, but I know we are online. Ab bacche bhi dekh rahe hain, and youngsters, they don't know. So I asked somebody, I said, the person say, aap log to bada jo na ye aise karte hain, waise karte hain, awliya karam, anbiya alayhi karam, ye kya karte ho bhai, tum Quran Pak padho. Bhai, hum to Quran Pak padhte hain. मैंने कहा तुम सूरह फातिहा पढ़ो. कहते मुझे तो सूरह फातिहा आता है, मुझसे क्यों पूछते? बस तुम पढ़ो और मैं भी पढ़ूंगा. पढ़ा उन्होंने, शुरू किया उन्होंने, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह वलद्दालिन आमीन पढ़ लिया. मैंने कहा मैं पढ़ूं? मैंने कहा तुम पढ़ो. मैंने कहा इला हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्हाब किराम अज़वाज मुत्तहिरात अहले बैत अतहर करबला शहीद औलिया किराम शुहदाए बदर शुहदाए उहुद शुहदाए खंदक कुल ग़ज़वा नबी अकरम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. That's all the battles in which Nabi sallallahu alaihi wasallam took place, with all those who have passed away and given their lives. Azwaj Mutahhirat, the purified wives of the Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Silsila Qadariya, Chishtiya, Naqshbandiya, Sarwadiya, Shadaliya, Rifaiya, Ashrafiyya, Ba'alawiyya, Tijaniya, Kul Silsila Haqq. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. अब मैंने पूछा कि भाई किसके सूरह फातिहा अच्छा है? वो सूरह फातिहा हैज़ मोर वैल्यू. सूरह फातिहा तो तूने अपने लिए पढ़ लिया, और मेरे सूरह फातिहा मैंने जो पढ़ा है मैंने आपको भी शामिल कर दिया. अगर आप मुमिनून, इफ यू आर अमंग्स द मुमिनीन, फिर आप भी शामिल हैं. वकुल मुमिन व मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तो आप भी शामिल हैं. उन्हें कि वाकई जो सूरह फातिहा आपने पढ़ा
That is a more meaningful Surah Fatiha. So, Imam Sahib recited so beautiful. Before you recite, first do that. इंशाअल्लाह नज़र करम हो जाएंगे अव्वल बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौस पाक सब जितना भी औलिया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़र कम हो जाएंगे सूरह फातिहा से ही शुरू लुक वी कैन डू द जिक्र आई स्टार्ट इमीडिएटली जिक्र ख़त्म हो गया हम सब घर चले गए you will forget this fat guy was sitting on this mimbar and he did this zikr and you will forget about it लेकिन ये है कि we want to do a zikr with sustainability कि जिक्र करते हुए हमें फ़ायदा भी होगा और इल्म भी होंगे इल्म all this information you will take and you will carry it throughout your lifetime even after our eyes close the next generation must continue तो ये अव्वल बात है ये सूरह फातिहा अगर पेश किया जाए तो ऐसे और देखो आखिर पे रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया आमीन we also ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our parents right तो सूरह फातिहा उनके शफ़क़त के लिए है Allah must grant them a high place in the garden of paradise whether al-ahya'i minhum wal-amwat whether they are alive or they've passed away Durud Sharif hold on And then Durud Sharif you read a beautiful one but if you read it like this one सबको मज़ा आएंगे बच्चे पढ़ेंगे Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم अब ये बताऊं you're going to adopt that way of reciting please अगर हो जाए ना तो मुझे भी सवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह शफात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएंगे मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो मैं नहीं हूँगा इंशाल्लाह उम्र तो बड़ा हो गया पता नहीं कितना दिन रहते हैं so इंशाल्लाह अगर you adopt this way the children will enjoy to recite it as well इंशाल्लाह मज़ा आएंगे और it's a meaningful salawat as well and everybody can recite it together in unison इंशाल्लाह right? दूसरी बात यह है कि when we do the astaghfar we start off first with the astaghfar right why अस्तगफिरुल्लाह पहले करते हैं ना इमाम साहब अस्तगफिरुल्लाह हम पहले पढ़ते हैं नहीं हाँ जी शेख हुसैन जिक्र से पहले अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व तव्वाबुर रहीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि और अदर वेज आल्सो तो अस्तगफार अगर पढ़ेंगे अच्छा जिनके औलाद नहीं है इनको तो औलाद चाहिए राइट those who are suffering from poverty and don't have job don't have work they sit in the masjid they come here for the dhikr they can get it those people jinke keti bari in other words their gardens and their farms and their livestock is failing when they come for the dhikr they will get it right Hazrat Imam Hassan al-Basri radiyallahu anhu
एक आदमी उनके पास आए, one person came to him, he said, इमाम साहब दुआ फरमाइएगा। Imam Hassan al-Basri, you know, he was the Khalifa of Mawla Ali Karamallahu Wajhul Karim. You know, there's one chain going from Sayyidina Imam Ali Maqam, Sayyidina Imam Hussain, another chain going from Hazrat Imam Basri, Imam Hassan al-Basri. So he was a alim, was a sheikh, he was, you know, everything you can think of, that is what he was. Hazrat Imam Hassan al-Basri. So one man came to him, उनके पास आए, कहते इमाम साहब हमारे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा औलाद नहीं है। I don't know the order, but एक आदमी आए कहते कि मेरा औलाद नहीं है। उन्होंने कहा अस्तगफिर पढ़ो, make अस्तगफार, right? दूसरा आदमी आया, in whichever order, he said इमाम साहब make दुआ, मुझे औलाद चाहिए, I don't have any children. तो इसे अस्तगफार पढ़ो, make अस्तगफिरुल्लाह, make तौबा, make अस्तगफार। इसे ठीक है, चले गए। Third person came, said इमाम साहब, my garden, my lands are dry, कोई बारिश नहीं है, crops are failing। इमाम साहब ने कहा अस्तगफार करो। अब जो मुरीदीन हैं and the muhibbin that was sitting there पूछ रहे थे कि इमाम साहब, 3 people came with 3 different questions. एक आदमी आए, क्या उनको, क्या वो is in poverty? You said make astaghfar. Another person said मुझे औलाद चाहिए, you said make astaghfar. Other person said बारिश नहीं है, my crops are failing, garden is dried up. उन्हें कहा अस्तगफार पढ़े। For 3 different reasons, for 3 different क्या कहते हैं needs, you said make astaghfar. हज़रत इमाम हसन अल बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो जो मैंने कहा, मैंने अपने तरफ से नहीं कहा, ये कुरान पाक में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। Make astaghfar, you will find Allah subhanahu. Make tawbah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. You will find Allah subhanahu wa ta'ala most forgiving. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. And He will send to you abundance of rain. खूब बारिश भेज देंगे आपको. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. And He will enrich you and He will grant you offspring. وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. And He will grant you gardens and He will grant you rivers. From Surah Nuh, ayah number 10 to ayah number 12. ये सिर्फ अस्तगफार के लिए है। अब आप हर जुमेरात को आते हैं, अस्तगफार पढ़ के चले जाते, तुम्हें मालूम भी नहीं कि भाई हमने क्या क्या है। भाई, you come here, you have all your issues sorted out just by astaghfar alone. Obviously, the carrier is the salawat upon Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. And because I am giving you this talk, astaghfar is happening every Thursday anyway. So if I do it now and then Imam Sahib going to do next Thursday, fine. But what I'm telling you now, आप astaghfar अगर पढ़ेंगे तो क्या आपको सब कुछ मिलेंगे, तो you will do it with more meaning. Alright? दूसरी बात यह है कि in the mahfil of dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala will love that when you practice upon the sunnah of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam by coming together, sitting close by. अगर आप नज़दीक आ जाए, you are coming more closer to the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, because Nabi Karim sallallahu recommended that when we sitting in a gathering, try and come closer. Inshallah इसमें बरकत होंगे. तो बरकत जिनको चाहिए तो वो आ जाए, आ गया. You take one step towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will take 10 towards you. और तकब्बर मत करो, गुरूर मत करो. Be humble and come forward for the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. अब जो नहीं बैठ सकते सही, उनको they need some support, no problem. ज़ईफ़ों को, जो बीमारों को, जो आए हुए हैं,
बड़ी बात है कि in the masjid, you understand, to those who want to sit with the comfort, we can understand. अब तो जुआन हैं, वो आगे आ जाए حضرت towards Sylvie Kimalad, the Sylvie askar. Kimalad, li capava si avec Mirai, Sylvie qui ne le sentait bon, s'il vous plaît, coste divo, min pare. Sylvie qui le sentait bon, capava si min pare. Jazakallah. हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे we don't want to be here. We have an attitude. If we don't have the proper attitude towards Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, we make the astaghfar. इसे तुम आए भाई दुआ में ऐसे करते हाथ इधर करते हैं, Allah subhanahu से मांगते हैं. This is the way. So alhamdulillah, jazakallah khair for coming forward. It was beautiful of you to do that. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ab, that is astaghfar. We're going to do short astaghfar so that we don't take too much time. But I thought I'll educate you so that when you go home and next week when you do the astaghfar, you will do it with more meaning. Those who are in difficulty, in poverty, don't have awlad, don't have job, don't have prosperous business, do astaghfar. Allah will grant it to you, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 Now we come to La ilaha illallah. La ilaha illallah पढ़ेंगे, right? पहले we emptied out the garbage. जो गुनाह वगैरह जो कुछ है, all the debris, the garbage, the dirt, the bin. I think the bin guy comes here, I think once a week. Huh? The municipality come and fetch the dirt here. You have bins here? The municipality come to fetch once a week the dirt. So once a week we are cleaning out everything with the astaghfar. Right? And we are also getting all the ni'mas that Allah subhanahu wa ta'ala promised us in Surah Nuh, ayah number 10 to ayah number 12. जो मैंने बताया था. Right? This is a big topic of La ilaha illallah. We're not going to go too long in it. सिर्फ ये है कि when we say La
negative. We remove all the negativity from the system. Ilah is Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other ilah. Besides, illallah, dil ke upar zarb karna, to strike onto the heart. La ilaha illallah. Abhi, what happens? Ab la ilaha pad ke sawab, you got sawab, now you got home. I think the Imam Sahib is going to give you explanation about that. When the heart is empowered with the word of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, ये दूसरा वाबी सलफी वगैरह कहते कि भाई तुम जिक्र करते अल्लाह का नाम पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ते, यार तुम क्या करते हो? The Sufyana Ikram taught us, when you say La ilaha, the negativity you remove from your system and you bring in positivity and the light and the nur of Allah subhanahu wa ta'ala into your heart. La ilaha illallah. La illallah, your head must go to the heart. अब जितना भी तेजी से पढ़ेंगे आप, you're going to say हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा. Acha, watch me. I didn't think about where I'm putting my head. Don't concentrate on where you're putting your head. You only concentrate in the beginning. Uske baad, your head will automatically go to where your heart is. First concentrate in the beginning. Ab har Jumerat ko Imam Sahib, Honorable Sheikh, inculcate this. Your head must go just stay where your heart is. Don't concentrate now, मैं ऐसे करता हूँ और मैं वैसे करता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ. So you're concentrating on तू क्या करते हो भाई? You concentrate on making La ilaha illallah. You understand? First you concentrate in the beginning. You say, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, حق لا إله
illallah, la ilaha illallah, haqq la ilaha 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 illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. आपको मजा आए? This is a starter pack. Know what's a starter pack? You must do at least 500 times. You won't feel it. This was 100 times. कितना जल्दी चले गए? 100 times हमने किया था. This is the starter pack. 500 मर्तबा करना चाहिए. And concentrate on the heart. To open up the arteries. The people have heart problems. ये arteries को खोलेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला through the nur, the laser of la ilaha illallah, through the laser of illallah, through the laser of illallah biiznillah ta'ala, to the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. If you do the azkar in the way that it's supposed to be beneficial for your health, spiritual health and your physical health, then you come here, the masjid will be full if they know what is the benefit of the azkar. जी और फिर we come to दुरूद शरीफ. अब दुरूद शरीफ का बड़ा, this is something, is a long topic. Our Imam Sahib will talk to you about durood sharif. One of the things I can tell you, first of all, this month of Sha'ban, yahi mahina hai, in which the ayah was revealed to Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. That is the reason, one of the reasons why this is the month of Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Kyun? Because this ayah was revealed in the month of Sha'ban. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Illa Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim. That is how we do it in Cape Town. You put it on the poster, so I said, let us give you some Cape Town flavor. And if I give you the proper salawat, how we do it in Cape Town, this is coming from Medina Munawwara, came through the Ba'alawis and the great sheikhs that are buried there, to Anguru, as a Sheikh Yusuf from Makassar, as a Sheikh Nurul Mubin that is buried in the mountains, Sheikh Abdul Rahman Motura Shah, Sheikh Abdul Rahman Matibi Shah, Sheikh Mahmoud, from Cape Town, you see all these mashayikh, they came, they brought it through the chain from Madinatul Munawwara, right through the chain. And this is how they recited the salawat. Main aapko introduce kar दूं. It will be on the YouTube, inshallah. اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافرون. When they come to the salawat, then we do like that. And then we say astaghfirullah and we say la ilaha illallah. We start with the la ilaha illallah. And that is how we do our askar. And I didn't do the full Cape Town dhikr. It will take a long time. Or appear you wouldn't have got the gems and the diamonds of the essence of astaghfar. You wouldn't have gotten the gems and the diamonds of the essence of la ilaha illallah. For anybody got heart problems? You're going for operation. They say you're going operation, you must wait, you got 6 months, whatever. Tum ye karo by 500 times illallah onto your heart. Put the laser, let the laser open up, inshallah. Bi'idnillahi ta'ala wa daniya. Then you say, biniyati shifa wa raddil bala. With the niyyah of shifa, and may Allah subhanahu remove the bala. I'm weighing more than 100 and maybe 150 kgs now. I don't take tablets. This is my tablet. Ye mera dawa hai. I don't take high blood pressure tablets and sugar tablets. Today my pressure was high. Was what? I think what was it? 156 from the heat. Ab mera umar or mera weight is supposed to be patane 200. We do not used to this heat. So, barhal, alhamdulillah, bi'idnillahi ta'ala, I'm not taking no tablets. No sugar tablets, no high blood pressure tablets. I am not fit. This is the thing that is keeping me going. I'm not telling you you must make exercise and eat right. But ye jo na aapke liye is a great ni'mah. This is more than gold and diamonds. Hamara deen ne sab kuch diya hame. But we are not using it. We are not utilizing. We are not utilizing the azkar. And then, remember we said about the salawat upon the Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ab main aapko salam kahun. Shamim bhai, main salam keh दूं aapko, to aap mujhe kahenge wa alaikum salam. Lekin you don't know what's in my heart and in my mind. कि ये शमीम जो है ना ये अच्छा आदमी नहीं है या अच्छा आदमी है या वैसी भी है. I don't like his hairstyle. I don't like his clothes, whatever it is. He don't know I'm making salam, he's making salam. अब आप सलाम कहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या उनको नहीं पता कि what is in your mind, in your heart when you send salam to him? Beware of reciting salawat upon Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam where your mind is going. Every time we try to recite salawat, shaitan takes your mind to the gutter. You try it and you see. Be conscious when you're reciting salawat upon Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. When you're sending salam, remember you are being scanned. ये बंदा उसके ज़हन में क्या है अभी, इसके दिल में क्या है? Nabi Karim sallallahu knows. Nabi sallallahu alaihi wasallam knows when you're sending salawat upon him. तो इसके लिए we will do the salawat in the form of salami in the end, because I see the time is running away with us, right? And we did some salawat just now earlier on. But I want to give you some kalam which I know you're waiting for. तो शायर ने क्या खूब फरमाया है, and this is about दुरूद शरीफ, and he says हुदूद तायर सिदरा, हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं. What is the height, the intiha of this bird that goes to the sidra?
Allah subhanahu wa ta'ala's mahbub, he knows. Who is he referring to? He's referring to Jibreel alayhi salam. वो कहते कि भाई ये कौन है? हुदूद तायर सिदरा, हुजूर जानते हैं what is the hudud of Jibreel alayhi salam, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ और कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं. So he knows the status of Jibreel alayhi salam, कहाँ जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे. And he knows where the Arsh Mu'alla is, because from that point onwards इसने कहा कि मैं अब जा नहीं सकता. Jibreel alayhi salam said, I cannot go any further. All right? You can go for the both सारे अशहार हैं. I'm not going to go into that, but he said मैं अब जा नहीं सकता, आ गया. All right? हुदूद तायर सिदरा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं. And where is the अर्श मुअल्ला? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam knows, because from Sidratul Muntaha onwards he carried on alone. तो शायर कहते हैं भाई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knows where Sidratul Muntaha is and where is the Arsh Mu'alla, तो क्या उन्हें खबर नहीं है कि भी आप अगर सलाम पेश करेंगे तो आप कौन हैं और आप कहाँ हैं? तो शायर ने क्या खूब फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम. तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, को कमीना हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या लाज रखना के मैं रखना कि मैं तुम्हारा हूँ. मन गुलाम या रसूल अल्लाह, इश्क और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह. इश्क और मोहब्बत के साथ you are sending that salawat. Let the mind be going to Gumbad Khazara or wherever that can connect to Nabi Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. फिर पढ़ो sallallahu रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. हुदूद तायर सिदरा, हुजूर जानते हैं हाँ, और कहाँ के अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं कहाँ के अर्श मुअल्ला. वही अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं. उन्हें खबर है कहीं से
उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर कनकशां हुजूर जानते हैं। हाँ, दहर का नक्शा का मना है द लोकेशन इन द मैप वे यू आर, हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। क्योंकि कहाँ है अरे शेमुअल्ला हुजूर जानते हैं। अगर उनको अर्श मुअल्ला का मालूम है तो उनको नहीं पता कि भाई तुम कहाँ हो। अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो कहाँ पढ़ो कहाँ गैर शेमुअल्ला हुजूर जानते हैं। खाशिर बरोज़ हशर शफाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़ हशर शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हाँ, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जान। ये शेर जरा सुन लीजिएगा और सुभान अल्लाह कहे। वाह। बरोज़ हशर, on the day of Qiyamah, on the day of Hashr, right? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, शफाअत करेंगे चुन चुन कर। He will pick and choose who he is going to make shifa for. क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। Because he knows the चेहरा of each of his gulams, of each of his ones who he loved. He knows the chehra of each one. He knows the face, the chehra, the muh mubarak, the aapke chehra. What do you say for the face? What do you say in French? Face. In French. Nabi Sallallahu knows each and every one that is reciting salawat upon him. All right? कहाँ क्योंकि कहाँ गैर शेमुअल्ला हुजूर जानते हैं। ये चंद अशार मैंने पेश किया है ताकि आपको मालूम हो कि हम अगर सलाम पेश करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, we also first of all we need to think when we are making the salam दुरूद शरीफ पेश करते हैं, then Nabi sallallahu alaihi wasallam knows who is sending and knows what is the condition of your mind and your heart. So don't let your mind be in the gutter, don't let your heart be in the gutter. When you're sending salam, don't think about what was you watch on television, what you were doing, whatever. Don't let your mind go in the wrong places. Think and send your salawat and think of anything that connects you to Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. One of the easy ways is to think about the Gumbad-e Khazara. Ji. So, salawat upon the Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we will do inshallah in the form of the salami in the end inshallah. Right? Or फिर we do one kalam on Hazrat Hosei Pak, because that is also the recommendation that I got inshallah, and I will try to do. You see mera awaz bhi nahi hai, voice is gone, and I will try inshallah. आप salawat पढ़े
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार गौसे आज़म। I was in Baghdad Sharif, and Hazrat Afifuddin Jilani Sahib, the Gadi Nashin, the descendant of Ghaus-e Pak, he called us to his private library, and they made me recite this kalam. And he said he enjoyed this kalam so much, and I'm sure you will enjoy it as well, inshallah. उन्होंने कहा ये अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, तो उन्होंने बड़ा enjoy किया है. The next morning, well, okay, that night we went to the hotel. Next morning, one of the leaders of the group said, they put it on Facebook and they got so many thousands of people that liked the kalam. तो इंशाल्लाह आप साथ मिल के पढ़िएगा, उस पाक के नज़र करम हमारे ऊपर हो इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह we will finish with our program, which I promise you that we will do about an hour. We started at about 9:10, and so inshallah we try to finish off by that time, inshallah, wada ke mutabik. दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा खुदारा मेरा खालिका सबर दो बर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा बोलो सरकार गौसे आज़म आज़म नजरे करम खुदारा खुदारा मेरा खालिका सफर दो बर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। तू सरापे हसन है, तू बहारे पंजतन है पंजतन, तू सरापे हसन है, तू बहारे पंजतन है, तू हुसैन का चमन है, तू नबी कहे दुलारा बोलो सरकार गौसे आज़म आज़म नजरे करम खुदारा खुदारा मेरा खालिका सफर दो बर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। जो नजर उठा के देखो तो वो सामने मदीना। मुझे ये ख्याल आ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडला बेटा गौसे पाक is standing on the roof of his mother's house, और वो is looking at the काफिला going, काफिला मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं, और वो सोच रहे कि भी ये लोग मेरे नाना जान की तरफ जा रहे हैं, और इनके चेहरे पे आंसू, the tears are rolling down his cheeks because he's crying and he's thinking, I wish I could go and make a hazri by my Nana Jan. और ऐसे रोते रोते सामने उनको रोज़ा पाक नज़र आते हैं बगदाद शरीफ से।
तो शायर क्या कहते हैं, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा खुदारा मेरा खालिका सबर दो बर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। जो नजर उठा के देखो तो वो सामने मदीना मदीना। जो नजर उठा के देखो तो वो सामने मदीना। मेरा इश्क के रहा है ये मकाम गो से आज़म। बोलो सरकार गो से आज़म आज़म नजरे करम खुदारा खुदारा मेरा खालिका सबर दो बर दो मैं फकीर हूँ खुदारा। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। बोलो सरकार गौसे आज़म आज़म नजरे कर खुदारा खुदारा मेरा खालिका सबर दो बर दो मैं फकीर हूँ खुदारा। मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और आखिरी शेर में पेश करता हूँ, मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका सदका मौला अली का सदका हिंदल वाली का सदका मौला अली का सदका जमाल शानी का सदका मौला अली का सदका दादी आमीना का सदका मौला अली का सदका कुल औलिया का सदका मेरी लाज रख लो या गौस मैं फकीर हूँ तुम्हारा। बोलो सरकार गौसे आज़म आज़म नजरे करम तुम्हारा खुदारा मेरा खालिका सबर दो बर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मैं फकीर हूँ तुम्हारा। तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे हैदरी नारे गौसिया या गौसल आज़म। अभी सलामी के लिए खड़ा हो जाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى جاني رحمت पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम ताजेदार गरम शागदे तुम पे गर्दन करूँ दुरूद सलाम सब पढ़िए तुम पे करोड़ों दुरूद हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दे हो निगाहे करम हम पे तुम पे गर करोड़ों दूर कर न दम टूट जाए कहीं या रसूल अल्लाह दूर रह कर दूर रह कर नदम टूट जाए कहीं काश तैबा में मेरे माए मुबे काश तैबा में मेरे माए मुबे दफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीं दफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीं तुम पे गर्दन करोड़ों दुरूद सलाम ताज तारे हरम ऐ शहंशाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम फिक्र उम्मत पेरा तो को रोते रहे मेरे आका फिक्र उम्मत मेरा तो को रोते रहे आसियों के गुनाहों को धोते रहे आसियों के गुनाहों को धोते रहे तेरे कुर्बान जाऊं मेरे में जब भी तुम पे गर्द करोड़ों
दुरूद सलाम ताज तारे शाग दे तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम होने गागे करम हम पे सुल्तान दे तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदों सा अब मदीने अब मदीने में सब को बुला लीजिए मेरे आका अब मदीने में हम को बुला लीजिए और सीना मदीना बना लीजिए और सीना मदीना बना लीजिए अस्पे गौसे आज़म और ख्वाजा मुईन तुम पे गर्दम करोड़ों दुरूद सलाम। आप तशरीफ रखिए, हम दुआ करते हैं। الفاتحة الفاتحة إلى حضرة نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكل أنبياء عليه الصلاة والسلام أصحاب الكرام أزواج مطهرات أهل بيت كربلاء شهيد أولياء الكرام سلسلة قادرية چشتية نقشبندية سرودية شاذلية رفاعية أشرفية كل سلسلة حق الفاتحة ایک سورہ فاتحہ پیش کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم لنعم رب اغفر لي ولوالدي آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافي نقمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد إذا رضيت أن دائما أبدا اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزقنا ونور به قبورنا ونور به قلوبنا يا ربنا يا رب الكريم يا الله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك Ya Allah, open up all the doors of mercy upon all of us sitting here, Ya Allah. وعزائم مغفرتك and that of forgiveness, Ya Allah. والسلامة من كل إثم and protection from all evils, Ya Allah. والغنيمة من كل بر and a share in every good and righteous act, Ya Allah. والفوز بالجنة ونجاة من النار يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, لي خمسة أطفي بها حر وباء الخاتمة. When we, Ya Allah, हमें हुस्नुल खातिमा अता फरमाए और पंजतन पाक के साथ रखे या रब्बना in the highest places of the garden of paradise. لي خمسة أطفي بها حر وباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة يا ربنا يا رب الكريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, grant us all the goodness of which Nabi Karim Sallallahu made dua for, Ya Allah.
وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. And grant us, Ya Allah, protection from all that shar and evil of which Nabi sallallahu alaihi wasallam have asked for. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Ya Allah, you are the one that will make it possible. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. All the power belongs to thee, Ya Rabbana, Ya Rabbal Kareem. Ya Allah, हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे हबीब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन. या अल्लाह, हमने अपना नफ्सों पे, अपना जानों पे जुल्म किया है. And if you don't forgive us, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, we will be of the lost, Ya Allah. Ya Allah, so please forgive us, Ya Allah. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا, and guide us and vindicate us, free us من القوم الظالمين, from the tyranny of the ظالمون. يا ربنا يا رب الكريم, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, it is a Thursday night, Jumerat, Jumme ke raat hai, and it is the month of Sha'ban, and मैं मुसाफिर हूँ. या अल्लाह, ये देखते हुए आपके रहमत को देख, हमारा गुनाह को मत देख, और इस दुआओं को कबूल फरमा, इन दुआओं को कबूल फरमा या रब्बना या रब्बल करीम. या अल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदीना व लिमशाइखिना व लिउस्तादिना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या रहमान रहीम. या अल्लाह, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा. इश्फी अंत शाफी, अल्लाह ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युग़ादिरु सक़मा. या रब्बना या रब्बल करीम, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الله محمد النبي الأمي على آله وصحبه بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. First of all, I want to thank each and every one of you for sitting and not going away. And I also want to thank the Imam and the committee members for allowing us, giving Shamim the go-ahead to say that and put up a beautiful poster you did, mashallah. I sent it throughout South Africa and they are watching online, inshallah. And Allah subhanahu wa ta'ala grant you all khair and barakah and grant you all the reward. And there was some requests that I was supposed to do tonight, but time was upon us and I didn't want to break my promise with regards to the time. उनमें से तो ये था, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद
तेरे सदक़े में आका सारे जगह को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह। या ग़ज़ा you have my heart, nothing shall bring us apart, have no fear, Allah is near, He'll compensate for every tear। हमने फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ नहीं किया, इस वजह से हम यहाँ पे दुआ कर रहे हैं। या ग़ज़ा you have my heart, nothing shall bring us apart, have no fear, Allah is near, He'll compensate for every tear। हस्बी रब्बी मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। Years and years of oppression, will this end is the question. Years and years of oppression, will this end is the question. Ummah, let's raise our hands and make dua for Palestine. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Noor Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Noor Muhammad sallallahu illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Noor Muhammad sallallahu illallah. Ya Aqsa, you have my heart, nothing shall bring us apart. Have no fear, Allah is near, He'll compensate for every tear. Ya Aqsa, you have my heart, nothing shall bring us apart. Have no fear, Allah is near, He'll compensate for every tear. Hasbi Rabbi ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. From the river to the sea, Palestine will soon be free. Amin bolo. From the river to the sea, Palestine will soon be free. Oh Ummah, let's raise our hands and make dua for Palestine. Hasbi Rabbi ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. अल्लाह पाक के तारीफ करते हुए कौन मक्का में है अल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह. कौन मक्का में है अल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह. जिस्म में जान में है अल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह. हस्बी रब्बी मा फी क़ल्बी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. तकबीर रिसालत या रसूलल्लाह. अस्सलामु अलैकुम. जिंदाबाद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू. हमारा प्रोग्राम तो उस टाइम ख़त्म हुआ, ये तो बोनस ट्रैक है इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम.